Welcome back, everyone. In this video, we are going to talk about another physical property, and that is the ability to float or sink. What does sink and float means? Float means when you put something on the water and it stays above the water. क्या होता है? It stays above the water. उसको हम कहते हैं कि the thing is floating. And if you put something in the water and it goes below the water, ठीक है, तो that means the thing is sinking, or you can say कि वो चीज़ डूब जाती है, उसको भी हम कहते हैं कि it's the physical property of a thing. ठीक है, तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो कि फ्लोट भी करते हैं, एंड देयर आर सम एग्जांपल जो सिंक करते हैं. फॉर एग्जांपल, थिंग्स दैट फ्लोट आर आइस. आइस क्यूब जो है आप पानी में डालें, यू कैन सी कि इट स्टेज ऑन द वाटर. इसके अलावा प्लास्टिक बॉटल और एनी अदर काइंड ऑफ प्लास्टिक, इट ऑलवेज स्टेज अबव द सी और वाटर. और इसके अलावा वी हैव वुड. वुड की एग्जांपल अगर लें तो बोट्स वगैरह जो हैं, दे आर एक्चुअली मेड ऑफ वुड, और वो हमें हेल्प करती हैं टू ट्रेवल अराउंड द सी. ठीक है, इसके अलावा देयर इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्क, ऑयल, लिथियम एंड सोडियम. आप देख सकते हो कि ऑयल जो है, व्हेन यू पुट ऑयल इन द वाटर इट नेवर सिंक्स, इट ऑलवेज फ्लोट on the water because it does not get dissolved inside it. ठीक है, due to its physical property. Okay, इसके अलावा हम अगर देखें कि the things that actually sinks in the water are glass. If you put a glass inside a water, it's going to go at the bottom of the water. ठीक है, इसके अलावा we have aluminum can, जैसे कि पेप्सी का कैन होता है या कोई भी कैन जो है, it's actually made of aluminum, और whenever you throw it in the water it goes at the bottom of the water. Okay, इसके अलावा blood जो है, it also goes at the bottom and it gets dissolved sometime. ठीक है, उसके अलावा हमारे पास गोल्ड है, कोल है, ग्रेनाइट है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली द मैटर दैट sinks in the water. So let's move on to the next slide. We are going to discuss about some other physical properties of metals. All right, to be specific, we are discussing about metal. ठीक है, so how does metal look like? The metals are lustrous. Lustrous means के shiny होते हैं. ठीक है, they are very चमकते हैं if you look at them, right? So this is what the kind of appearance they have. अगर आप example लेना चाहते हो तो you can see the spoon or the silverware you have in your home. You can see the different jewelries that you have it in your home, and you can see कि वो सब metal की होती हैं और they are actually very shiny. इसके अलावा the next thing is that the texture of the metal. मेटल का टेक्सचर कैसा होता है? मेटल इज एक्चुअली व्हाट, इट्स एक्चुअली सॉलिड. ये क्या होता है? ये सॉलिड होता है. एंड सम मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. फॉर एग्जांपल गोल्ड. ठीक है, गोल्ड एक मेटल है, और अगर हम यहाँ एग्जांपल भी लिख लें, गोल्ड एक मेटल है और वो बहुत हार्ड होता है, एंड इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एज वेल, और आपको मशीनरी यूज़ करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मोल्ड इट और चेंज इट्स शेप. ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं दैट आर आल्सो सॉफ्ट, और ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी these are used to make foil sheets and wires. ठीक है, तो metals दो तरह के होते हैं, they are hard as well and they are soft as well. ठीक है, सॉफ्ट में अगर आपने एग्जांपल देनी है तो आप ले सकते हो सिल्वर की, एंड इफ यू आई हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ द मेटल दैट इज हार्ड, तो आप उसमें ले सकते हो जी आप लिख सकते हैं जी, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड और एनी अदर थिंग जैसे कि आयरन. ठीक है, ऑलराइट.
let's move on to the next property, and that is the color of metal. ठीक है. Metal occur in various color. Gold is yellow, copper is red. ठीक है, आप देख सकते हो कि गोल्ड का कलर अगर हम देखें इट्स एन येलो कलर. ठीक है, और इसके मेटल के वेरियस कलर्स होते हैं. इसके अलावा जो कॉपर है वो एक्चुअली किस कलर का होता है, इट्स एक्चुअली रेड इन कलर. ठीक है, सिल्वर जो है वो वाइट होता है. टिन और निकल जो होता है वो लाइट पिंक होता है. क्रोमियम एंड एल्युमिनियम जो है वो लाइट ब्लू इन कलर होता है. एंड मोस्ट ऑफ द मेटल आर ग्रे इन कलर. ठीक है, तो मोस्टली जो है अगर आप देखेंगे वो ग्रे कलर में होते हैं मेटल्स. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ metal. And let's discuss the last part, and that is the density. All right, डेंसिटी की डेफिनेशन पहले हम लिख लेते हैं एंड देन विल डिस्कस व्हाट डेंसिटी इज. द mass present in a definite volume. एक डेफिनेट वॉल्यूम में जो mass प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं जी कि ये क्या है, इट्स अ डेंसिटी. तो जो metals हैं they have usually more density. If you tap any metal you can hear the resonance of the metal. This is due to the density. कभी आप उसको metal को जोर से किसी जगह पर अगर hit करते हैं तो आप उसके अंदर एक vibration महसूस करते हैं. ठीक है, it's because it has the greater density in it. ठीक है, इसके अलावा um, the objects having less density than the um, object that have high density are actually they can float on the water. ठीक है, ऐसे objects जिसकी density less है वो क्या करते हैं, float कर सकते हैं water पे. And the objects that are high in density they actually sink at the bottom of the water. Okay, so I hope you guys understood what are the different physical properties of metal. See you guys in the next video.